हाँ वो सिक्योरिटी यहाँ चले अब नहीं आएगा। Only 3 more minutes. The people are joining, participants are joining, and we will start again. This is an interesting part of this meeting. So please stay.
So the first reason we are starting again our lecture. The first reason why do we need to adopt the FsQCA rather than the regression and SEM? Set theoretic arguments are often erroneously reformulated as correlational hypotheses. As in previous example, their relationship between them is not a correlation, but is an asymmetric relation between all three examples. Hence, they are tested with the conventional correlation approaches. So the scientists and the researchers mostly mostly reformulate these correlational hypotheses in correlational hypotheses seemingly and test it with the conventional correlation method. It should be tested with QCA in its future nature of relationship, in its true nature of relationship, asymmetric. So the relationship between them is asymmetric, not a symmetric relationship. That is the requirement of the conventional correlation method. The second thing is that asymmetrical versus symmetrical relation. The set theoretic connection as opposed to the correlation connection is that they are asymmetrical. In a set theoretic connections are asymmetrical and conventional correlational methods are based on the symmetric data. However, QCA is individual case outcome forecast based on the asymmetric data. What do you think? Are data really symmetrical in nature? When we use and when we suppose that the data is symmetric, in fact, it is our suppositions in that case. There is a microcosm. The individual being is a subset of a large set macrocosm. Plato called the whole universe is a macrocosm, and the single person is a microcosm. The single person is a subset of the whole universe. That's a big macrocosm. And still, the microcosm, that a different entity, even the two twin brothers and sisters are two brothers, they are not identical in thinking and in their future plans and in their behaviors with the pupils. They are different at all. So the every entity is a different from an other person. Yet every individual is different from other. How can you say that the data is symmetrical? In fact, it is supposed that the data is symmetric. However, that data is not symmetric, and we will discuss later on again this thing. The third reason is the QC is more generalizable than conventional correlation method. QCA combine the logic and empirical intensity of the qualitative approach that are rich. Qualitative approaches that are rich in contextual information with quantitative methods that deal with a large number of cases. It is more generalizable than symmetric theories tools of conventional correlation method, that is regression. This ability that bring together the basic concept from both qualitative and quantitative techniques of analysis differs substantially from the traditional method of quantitative analysis that are often variance-based and employ null hypothesis significant testing. The conventional correlation methods, you know that we are going to test most probably with the null hypothesis significance test. The main statistical end product of null hypothesis is the p-value, and we are thinking about the p-value. If the p-value is less than 5% or 5% or 10%, then we say that the statement is significant. Otherwise, it is insignificant, which is the most commonly encountered inferential statistics and most frequently misunderstood, misinterpreted, and misconstructed statistics. This is how the value that the p-value is equal to probability data or data more extreme and H not true. We suppose that our null hypothesis is true. What is a p? The p-value answers the question. If null hypothesis were true, what is the probability of observing the current data
or data that is more extreme. Note that p-value is not the probability of that hypothesis is right and wrong. In fact, it assumes the null hypothesis is right. हम पहले से ही ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो ठीक है, और जब नल हाइपोथेसिस ठीक है तो इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये किसी न किसी तरह से हम अज्यूम कर लेते हैं। और जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू इज p-value don't tell you whether it is whether the hypothesis is right and wrong. It tell you the probability of data and data more extreme. It is a probability. Look at the equation. P value is equal to probability data and data when h not true. When null hypothesis is true, p value is the probability. This is the fourth reason of taking the preference of FsQCA. In this model, this is a linear model, we are going to get the net effect with the conventional correlational method. In general, variance-based method examine variable in a competing environment as they compute the net effect between variables in the model. FsQCA focus on a complex and asymmetric relation between the outcomes of the interest and its antecedents. There is asymmetric relationship between y, x1, x2, x3, combination of x1, x2, and x3. And there is a number of conditions that that implies to y in FsQCA. The outcome may be the result of variety of combination. There is a different combination, x1, x2, and x3. While in a conventional correlation method, we will get the net effect of x1, x2, and x3 on y. So the outcome may be result of variety of combination, and each combination contribute independently to it. And in an FsQCA, each combination is independent from the other combination. As we seek a design system that take into account all user with different requirement, we need method that enable researcher to compute multiple solution of the multiple type of user. अगर कन्वेंशनल कोरिलेशन मेथड है तो उससे हमें बेस्ट सोल्यूशन तो मिल सकता है, लेकिन हमें बहुत सारे सोल्यूशन नहीं मिल सकते। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हैं तो आपको मुख्तलिफ लोगों की मल्टीपल रिक्वायरमेंट है, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है। तो FsQCA से आप कई एक सोल्यूशन आपको मिलेंगे जिससे जो आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है, आप उस सोल्यूशन को ले सकते हैं। जबकि कन्वेंशनल कोरिलेशन मेथड में उन तमाम वेरिएबल का जो है वो नेट इफेक्ट हमें मिलता है। मैंने वीडियो नहीं चलाई। This is a big advantage of this FsQCA. The sample size of FsQCA may be less than 50 to large 1,000. It may be a large sample, it may be a small sample. FsQCA deal with the small sample and large sample. FsQCA is combinable with the category variable gender, which do not have been transformed into a fuzzy set. In such cases, some variable would be binary 0 and 1, while some other would be cover R value. हो सकता है FsQCA का एनालिसिस अगर 0 और 1 का होगा और कुछ का जो 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज का होगा तो ये आसानी के साथ उसको टैकल कर लेता है, जबकि रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो 0 और 1 के इम्पैक्ट को उस तरह से इनकॉर्पोरेट नहीं करता जिस तरह से FsQCA करता है. Data analysis with FsQCA lead to combination of the independent variable that also include variable that are not identified by the typical variance-based approach, since the capture of the main effect only. In a variance-based approach, जो main effect है वही कुछ मिलेगा, लेकिन FsQCA independent variables के कई एक combination आपको देगा. FsQCA split the sample into multiple subsets, thus examine multiple combination of condition. तो इससे multiple combination of conditions हमें मिलती है.
Unique data analysis technique. FsQCA require that the researcher has accurate workbench knowledge uh, uh, both of the examined variables, conditions and outcome, as well as the underlying theory and context. Such knowledge is used throughout the analysis. मतलब जो variables का knowledge है, जो आपके questionnaire, जो आपके survey का knowledge है, वो आप इनकॉर्पोरेट करते चले जाएंगे जब आप FsQCA को अप्लाई करेंगे. जब आप FsQCA को अप्लाई नहीं करेंगे तो वेरिएबल्स का डाटा लेने के बाद आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे और जो नेट इफेक्ट आएगा उसी को ही आप उसी की बेस पे आप जो है वो जर्नलाइज करेंगे. FsQCA में एक डाटा कैलिब्रेशन, डाटा ट्रांसफरिंग इनटू अ फजी सेट एक सहूलत मौजूद है जिसमें आपको डाटे को कैलिब्रेट कर सकते हैं. डाटे की नेचर के एतबार से आप डाटे को कैलिब्रेट करके उसे फजी सेट में ले जाएं. सिंप्लीफाइंग द मल्टीपल सोल्यूशन, आपको कई एक सोल्यूशन देगा और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट की जो डेप्थ होगी वो कहीं कोरिलेशन मेथड से ज़्यादा होगी. रिसर्चर शुड मेक डिसीजन एट द डिफरेंट स्टेज बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, and that is typical in qualitative analysis. This section is both a limitation and strength of FsQCA. Some people said that कि ये limitations हैं और ये weakness हैं FsQCA कि आप अपना ऑब्जेक्टिव जो है आप अपना सब्जेक्टिव राय जो है वो वहाँ शामिल कर लेते हैं. और some people say that इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ FsQCA क्योंकि FsQCA के जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा डेप्थ रखते हैं क्योंकि आप जो उनके वेरिएबल का नॉलेज है वो उनके इंटरप्रिटेशन में आप यूज़ करेंगे. While it can introduce subjective bias into the study, researcher own knowledge and understanding of the field and research problem can lead to a richer analysis and understanding of the data, which is not possible through conventional correlation method. The multiple outcome. FsQCA compute three solutions. Number one is the complex solution, number two is the parsimonious solution, and number three is the intermediate solution. The solution refer to the combination of the configuration that is supported by a high number of cases where the rule of combination lead to outcome is consistent. Complex solution represents all possible combination of conditions where traditional logic operations are applied. Complex solution में जितने भी आपके solution हो सकते हैं वो सारे होंगे और parsimonious में आपके वो वाले solutions होंगे. That parsimonious solution set is simplified version of the complex solution based on simplifying assumption. आप अपनी assumption को simplifying करेंगे and presents in most important condition which cannot be left out from any solution. और वो सिर्फ important condition जो है वही उसमें रखी जाएंगी जिन्हें हम core condition कहेंगे. जबकि the major difference between parsimonious and complex solution is that complex solution excludes counterfactual cases. जो complex solution है वो counterfactual cases को exclude कर देता है involving limited simplification while the parsimonious solution do that. The intermediate solution is obtained when performing counterfactual. जो counterfactual analysis है वो उसमें भी शामिल अगर हम करें तो वो parsimonious solution आपको मिल जाता है. While core condition appear in both parsimonious and intermediate solution, parsimonious solution, complex solution, हम इन तीनों से आप दो तरह की कंडीशन जो है वो निकाल लेते हैं. एक आप कहते हैं कि जी कोर कंडीशन है, एक आप कहते हैं प्रिफरल कंडीशन है. जो कोर कंडीशन है ये मस्ट होनी है, इनके बगैर सोल्यूशन नहीं हो सकता. और प्रिफरल कंडीशन समझ लें कि ये ऐसी कंडीशन है जिनके बगैर भी सोल्यूशन पॉसिबल है. और ये कंडीशन कन्वेंशनल कोरिलेशन मेथड से हम नहीं ले सकते. ये मल्टीपल सोल्यूशन देखें, ये एक मैंने फॉर एग्जांपल जो बुक थी उसी से डाटा लिया था. इस डाटे में जो सोल्यूशन दे रहा है वो दे रहा है 1 to 9 सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर जो डाटा है उसके. जब आपने सॉफ्टवेयर को अप्लाई किया तो आपके सामने 9 सोल्यूशन आए.
मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इनमें से हम सोल्यूशन को कैसे हम लेंगे कि सोल्यूशन 1 2 3 हम कंपेयर कैसे करेंगे कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक कौन सा सोल्यूशन है और किस सोल्यूशन को हम लेंगे। ये सिमिलरली मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो ओवरऑल कवरेज है ये 0.84 ये आर स्क्वायर की वैल्यू जैसे होती है हमारे कन्वेंशनल कोरिलेशनल मेथड में, सिमिलरली ये कवरेज की रेशियो जो है वो शो करती है। उसके बाद फिर हम जो इसकी एक और सहूलत है कि हम इसकी हर जो स्टेटमेंट है उसको अलग से दोबारा से स्पेसिफिक प्रोपोजिशन को टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि एक जर्नल उसका सॉल्यूशन मिलता है और जर्नल सॉल्यूशन के बाद फिर हम हर प्रोपोजिशन जो है उसको फिर टेस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली कि वेदर वो उस स्टेटमेंट जो है वो उसको हम सपोर्ट करेंगे या हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। टेस्ट प्रिडिक्टिव वैलिडिटी भी इसमें आसानी के साथ हल हो जाती है। हम इसको चेक कर सकते हैं, हम कुछ उसका सोल्यूशन का पार्ट जो है हमारे सर्वे डाटा का पार्ट जो है उसको अप्लाई कर लेते हैं और कुछ को हम हैंड आउट के तौर पे रख लेते हैं और फिर उसको ये डायग्राम है जो शो करती है कि जब आप अपने रिजल्ट को करेंगे, रिजल्ट को वैलिडेट करने के लिए जो हैंड आउट सैंपल आपने रखा होगा उसको फिर दोबारा जो है वो अप्लाई करेंगे सेकंड फेज में, जैसे ये डायग्राम जाहिर कर रही है। तो इससे फिर हम मालूम करेंगे कि क्या हमारे रिजल्ट वैलिड है या वैलिड नहीं है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये एक स्टेटमेंट है, सोशियोलॉजिस्ट कंजर्वेटिव और लिबरल का हमने डाटा लिया है और नॉट सोशियोलॉजिस्ट 30 एंड ये डाटा है 26। अब आप देखिए जरा, इफ यू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द कंटीजेंसी अबाउट टेबल, इस टेबल का कोरिलेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ज़रा, ये अगर आप इसका कोरिलेशन चेक करते हैं तो आप देखिए कि एक वैल्यू से मैं इसको 24 करने लगा हूँ। अब देखिए इसकी कोरिलेशन टोटल अपोजिट आ गया। अब सिमिलरली एक वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 25 कर दूं तो ये फिर पॉजिटिव आ गया। तो यानी एक दो वैल्यू से अगर ये दोनों वैल्यू y की वैल्यू जो है वो हो जाती है तो ये कोरिलेशन नहीं आता। अगर हम इनकी वैल्यू को थोड़ा कम या ज़्यादा एक दो वैल्यू से करते हैं तो कोरिलेशन जो है वो 100% चेंज हो जाता है। जो +1 है वो -1 में चला जाता है। लिहाजा कोरिलेशनल जो मेथड्स हैं वो इतने रिलायबल नहीं हैं, तो लिहाजा हमें अब मूव करना पड़ेगा दूसरे रिलेशनशिप की तरफ। In previous example of data, only one value would change the nature of the relationship. It is dangerous to test with conventional correlation method. It must be tested with asymmetric tool, that is QCA. मैं अभी क्वेश्चन लेता हूँ, ये मैं थोड़ा सा रह गया लेक्चर उसके बाद। दिस इज द यूरेनियम स्टोर्ड एट यूएसए न्यूक्लियर पावर। ये कोरिलेशन देखें, ग्राफ देखें इनका, ये दो वेरिएबल की कोरिलेशन है। और सर वी कैन ओनली सी द एक्सेल शीट। ओहो ओहो, ओके ओके, मैं भूल गया था। ये देखें, ये दो वेरिएबल की इनके भी कोई ना कोई कोरिलेशन आएगी और इस कोरिलेशन बेस के ऊपर हम कुछ ना कुछ इन्फर कर लेंगे। इन्फ्रेंस जो है वो इन दैट बेस ये ठीक नहीं होगा। अब ये देखिए, ये भी एक कोरिलेशन के दो वेरिएबल्स हैं, इस तरह से जा रहे हैं, ज़ाहिर है इसकी कोई कोरिलेशन निकलेगी। ये भी इनकी बेस पे आप पैटर्न को मालूम करके आप उसको नहीं कर सकते। दीज आर आउटरेजियस डिफरेंट पेयर्स एंड ऑफ कोर्स वन कैन क्विकली अंडरस्टैंड दैट जस्ट हैविंग सिमिलर पैटर्न डजंट मीन they might relate. However, for
many other pairs of the variable, our researchers sometimes infer critical results just on the basis of correlation without any theoretical evidence or explanation of their relationship. बेहतर हो कि हम वेरिएबल्स की नेचर को जानें और फिर जो है हम जो है वो उसको करें. This is the last slide, that the milk is measured in liter, not in kg. 1 liter of water is equal to 1 kilogram, but 1 liter of milk is not equal to 1 kilogram. So the proper variables in its true nature should be measured through their related techniques. Thank you so much. Question मैं लूँगा, अब क्वेश्चन आंसर सेशन है तो जी क्वेश्चन हैंड आप रेज करेंगे और यू कैन पुट अ क्वेश्चन. I will answer that question. जी जी शेख साहब. I have a question, sir. जी 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 या सर. Actually, this FsQCA does resemble like the Venn diagram. You know, we have the mathematician in the past, the name Venn. So Venn diagram is the correlation between among these three, three things. I mean, you have to just correlate or combine the two or the more than the two things one together. So when is one of the old mathematicians, he just gave the idea that we can just add or combine the things. Actually, if you can repeat your question. I didn't understand what actually you want to say. We saw a diagram that you in the beginning we on the screen we shown. In that diagram, that was the correlation among the three or the QCA like analysis. So in the past, one of the mathematicians named Venn. So he gave the same things, you know, combining or union or intersection, like जो छोटी stages पे होते हैं बच्चों को दिए जाते हैं. So these type of the things been just said. Actually, this resembles like the same actually. Yeah, it is in fact the Boolean algebra. ये Boolean algebra ही है जिसकी बेस पे सॉफ्टवेयर काम कर रहा है. इसमें सेट और सबसेट रिलेशन है. वो कह रहा है सेट और सबसेट रिलेशन कोरिलेशन नहीं है. ये सेट और सबसेट रिलेशन दोनों का जो इसका जो आउटकम्स होता है वो एसिमेट्रिक रिलेशनशिप है. ये हर वक्त हर कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह से कोरिलेशन में होता है. तो लिहाजा ये सेट थ्योरेटिक रिलेशन है. बल्कि उसने जो मैंने 3 एग्जांपल दी थी, स्मॉल फार्मर आर रिस्क अवर्स, डेमोक्रेटिक कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक. तो वो कह रहा है कि अगर इन स्टेटमेंट को आप कोरिलेशन, आप कन्वेंशनल कोरिलेशन से रिलेशन मेथड से चेक करेंगे तो ये गलत हैं. उसकी वजह ये है कि इनका रिलेशनशिप इस सेट और सबसेट का है. अगर रिलेशनशिप सेट और सबसेट का है तो फिर सेट और सबसेट की बेस पे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसी बेस पे ही हमें चेक करना चाहिए. तो दिस इज द आर्गुमेंट. Right, sir. जी जी. Any other question? Thanks, sir. Thank you, sir. Thank you. So my question is, how can we apply this technique to some continuous variables? Multi-value QCA. Not the variable values are continuous, like for example returns. This is the multi-value. This is the multi-value. Multi-value is underutilized at that moment, is in operation and not functioning totally. So we are at that moment we deal with the CSQCA and FsQCA only. I can show you that. Again, the lecture in which I show you the table, there is a crisp set, there is 3 other columns,
just me give some time. Share the screen. मैंने इसे देखा. I've seen the CRISP and multi-value and FsQCA. My question is whether we have to apply MVQCA for returns or any continuous data series, or we can use Continuous still not. FsQCA. No. डिस्क्रीट डाटा पे हम कर सकते हैं, कंटिन्यूस पे नहीं कर सकते अभी तक. जो मल्टीपल वैल्यू यानी कि आप कह रहे हैं कि 0 और 1 के दरमियान कंटिन्यूस वैल्यूज हैं, उनके ऊपर अभी तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी अंडर यूटिलाइज्ड है. तो ये सिर्फ CS पे, और आप डिस्क्रीट वैल्यू लेंगे 0 और 1 के दरमियान तो देन ये बेहतर होगा. अभी मल्टी वैल्यू पूरी तरह से फुली यूटिलाइज नहीं. Okay, sir. Thank you. Thank you. जी, any other question? Sir, do QCA is going to replace first and second generation statistical techniques in future, or especially in social sciences? Yes, certainly. QCA is a new technique and ये असल में आई ही इस वजह से थी कि जब चार्ल्स रेगन जो हैं वो काम कर रहे थे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर, तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे अपने रिजल्ट्स के साथ. वो जो उसमें मिसिंग वैल्यू थी, जो वेरियंस अजम्पशन थी, वो उस तरह से वो समझते थे कि ये ठीक नहीं है. तो उन्होंने फिर मूव किया इसको दूसरी साइड पे कि मुझे जो रिलेशनशिप की नेचर है उसी बेस का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है. तो यकीनी तौर पर आगे चल के रिग्रेशन से हट के हमें QCA की तरफ और NCA एंड अदर सॉफ्टवेयर विच इज मोर लेटेस्ट देन इवन QCA. इसके अगले लेक्चर में हम NCA को भी इंशाल्लाह जल्द शामिल करेंगे. अभी हम QCA की तरफ को समझ लें, फिर हम NCA की तरफ भी बढ़ेंगे जिसमें नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस किया जाता है. तो वो इसके बाद भी मॉडर्न है और इन दोनों को कंबाइन भी किया गया है. इन फ्यूचर में जो मुझे लगता है वो यही होगा कि NCA और QCA को कंबाइन करके हम ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा डेप्थ वाले रिजल्ट हासिल कर सकते हैं. जी, एनी अदर क्वेश्चन? And in future, certainly there will be a change of the research methodology, and the present research methodology will be replaced with the NCA and QCA. Any other question if there's someone? एजाज साहब ने शुरू किया था, हमाद एजाज साहब ने रेज किया था हैंड. जी. जी सर. Okay, sir, I have a question. जी. Sir, which is the best statistical tool to implement this QCA method? Like if you start any other software? R-square is Just the best one. Okay. R-square is the best one. It is just available in or any other? R-square is available. You can download the R-square, and this software is also available on the web from a Compass. Just write a word Compass on a Google, and if you write a software or FsQCA is available and free for everyone. You can download it and then apply. Thank you, sir. FsQCA जो ये R से R जैसा ही है या that is different from R or based on R? R से R और FsQCA को R से भी अप्लाई किया जाता है.
वैसे आर जी के जी बगैर मैं भी आई कैन अंडरस्टैंड आई कैन अंडरस्टैंड स्टेटा में भी सर इसकी कमांड है फजी के नाम से जी जी स्टेटा में भी ये FsQCA रन हो जाता है फजी के नाम से है कमांड मे बी जी जी Sir, can you provide this command in both R and Stata? Can you provide These both commands, maybe in R and Stata. or you can download, it is available I think, and Stata मैंने इस पे काम there is a command fuzzy you can install as SSC install fuzzy के नाम से अगर आप करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगी and you can take help from the Stata software. Okay, thank you. Thank you Sheikh साहब जी. Any other question? We have a 4 minute more. This is the first lecture and इसके बाद जब हम दूसरे लेक्चर करेंगे तो हम ये एक सीरीज ऑफ लेक्चर है और इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इसे बढ़ाते चले जाएंगे और अब 6 जून को हम दोबारा इसी चीज़ को कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और फिर हम भी इसको डिस्कस करेंगे और सिमिलरली इसी तरह से 11 बजे 6 जून को हम दोबारा इसकी मीटिंग करेंगे. Any question from any side? No question? Ji. This is a totally new technique and soon I think our methodology will be changed from a regression and conventional correlation method to a FsQCA or NCA, and FsQCA or NCA give you the more Sir, my question is if this technique does not deal with the continuous data, how can we shift our analysis from the conventional regression analysis to FsQCA in finance में या आप कह लें कि in any field that is using continuous variables? This is the limitation of this technique, but at the same time Charles Regan and his team is working on it. Okay, thank you. Yeah. If not any other, जी जी जी. जी डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना खूबसूरत प्रेजेंटेशन दी है और एक नई मेथडोलॉजी पर बात की है और हमें ऐसा एहसास हुआ कि जैसे हम जितना भी कोरिलेशन और रिग्रेशन पर काम कर रहे थे शायद सारा गलत हो गया हुआ है तो बहरहाल दिस इज़ न्यू टेक्निक और बड़ी आपने इन डेप्थ एनालिसिस की बातें समझाई हैं तो और ये दिस इज़ समथिंग बिग ओपनिंग फॉर ऑल ऑफ अस. So nice of you for presenting this one और hope कि आप इसको continue करेंगे और हमें better understanding होगी इस subject की और analysis की तो ये मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ. I'm from Lahore Garrison University. Thank you, sir. Thank you, Dr. Saab. So much thank you for your very nice comment. यकीनन one thing is constant, that is change. आपको पता है कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती तो हम जाहिर है कल को हो सकता है इसको भी रिप्लेस करने वाली कोई दूसरी मेथडोलॉजी आ जाए और इसमें भी हमें फिर कुछ खामियां या वीकनेसेस नज़र आना शुरू हो जाएं. इसी तरह से जाहिर है सेम कोरिलेशन कन्वेंशनल कोरिलेशन के जितने भी मेथड्स हैं इंटीग्रेशन हैं या समवट अदर जितने भी मेथड हैं जाहिर है उनकी भी एक अफादियत है लेकिन बस दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग a new way of taking the variables in that way. So हम इसको नए तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ जो है ना उसकी समझ हमें आ जाए और ज़ाहिर है फ्यूचर में चेंजेस आएंगी और ह्यूमन बीइंग की थिंकिंग बदलेगी और चीज़ें बदलती चली जाएंगी. Great. Thank you so much for everyone for bearing me in this technique, in this lecture, and we will meet inshallah on 6th June again. We will discuss further in this technique. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you so much, Dr.